Electronic health records of medical patients should be safe, secure, and private to those specific patients. To make this thing possible, there should be some standard mechanism or organization which is there to define rules which should be put together to make this information secure and safe. One particular organization of this type is HIPAA. HIPAA stands for Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, which was passed in USA so that information related to patients should be safe and secure. Now, so how does this HIPAA works? Basically, it sets federal requirements for handling protected health information. Now, there are two things. Number one, federal requirements, which is specific to some country, and then protected health information. This protected health information is basically the major core of this talk. So what is this PHI, protected health information? That health information about patients or criminals should be protected. Protected means that it should be used for only tasks for which it is attained. So what is PHI or protected health information? Basically, it is information about the health status of the patients, then provision of health care or payment of bills which are being done by the patients while they are discharged from some specific hospital. So the concept here is the de-identification concept. What is de-identification? So that patients can be identified based on their payment history, their health status, or their curement type things. Then again, PHI basically is information that can be used to identify an individual or information that relates to some specific individual. Now, what happens in this thing is basically there should be details about his current status, past or future appointments or information related to his medical type treatments. Similarly, healthcare provided to that individual by some government hospital or by some private organizations. So these all things should be given to a PHI. More specifically, we can say that this PHI includes all the information related to some specific patient. For example, his name, his father name, identity card number, NIC number, social security number, then his insurance type things, health plan, and so on. So PHI is basically all the records which are related to some specific patient in some specific scenarios. So where does HIPAA stands? HIPAA is basically responsible for making PHI information safe and secure. Similarly, what happens is in HIPAA, health related companies including government, private organization, hospitals, and volunteer type organizations, they all join together to protect PHI information of a patient. HIPAA duties. What are different duties? So major duties again, security of someone's medical record information. And then there should be some rules if there is some breaches of this security information. Suppose if patient's information is becoming common to other people, then there should be some rule that who opened this information. For example, in some cases, there is some penalty of money whenever there is some breaches. Just as I have given an example that in HIPAA, maximum penalty is about $1.5 billion, which is a very huge amount of money. Hierarchy of PHI. Hierarchy of PHI से मुराद हम ये लेना चाहते हैं कि whenever there is a patient, उसकी information कैसे शेयर की जा सकती है to other people. सबसे पहले हायरार्की में ह्यूमन या पेशेंट खुद है, यानी कि पेशेंट अगर चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है. अगर पेशेंट के बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो पेशेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट माइट बी अ लायर और सम डॉक्टर और सम रिप्रेजेंटेटिव, जिसको पेशेंट अलाउ करेगा कि आप मेरे से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. देन स्पाउस. स्पाउस ऐसा पर्सन यानी कि हमारे केसेस में जैसे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो एक साथ रहते हों, जुडिशरी सेपरेटेड ना हो, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. देन एडल्ट चिल्ड्रन. एडल्ट मीन्स के बड़े बच्चे यानी कि ग्रोन अप चिल्ड्रन, नॉट यंगर वंस और स्मॉलर वंस. देन पेरेंट्स अगर पॉसिबल हो, या उसके बाद फिर सिबलिंग्स और रिश्तेदार वगैरह. यानी कि सबसे मेन अथॉरिटी पेशेंट की खुद है,
उसके बाद ये एक हायरार्की डिफाइन की गई है इन हीपा कि पीएचआई की अगर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो कैसे शेयर होगी। देन वी हैव प्राइवेसी रूल्स। सो प्राइवेसी रूल्स क्या हैं कि जो हीपा ने डिफाइन किए हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो किन रूल्स के तहत वो शेयरिंग होनी चाहिए। मेजर फोकस अगेन किस पे है कि सिर्फ उन पर्पजेस के लिए शेयर हो जिसके लिए उसे दिया जा रहा है। देन प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल मेडिकल रिकॉर्ड्स, और क्या होता है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड्स की प्राइवेसी है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पेशेंट की अगर कोई और मेडिकल इंफॉर्मेशन है दैट शुड नॉट बी ओपनड अप। सो व्हाट आर हीपा प्राइवेसी रूल्स? कि हमारे पास क्या है कि जब भी कोई प्राइवेसी है या डाटा है अबाउट सब पेशेंट्स, उसको दोनों तरह से आपने सेव करना है, इंटेंशनल भी और अनइंटेंशनल भी। यानी कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं कि कोई बंदा अगर इंटेंशनली चाहता है, यानी कि वो खुद जानबूझ के अगर डाटा को कैप्चर करना चाह रहा है तो कैप्चर ना कर सके। सिमिलरली अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर भी नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इसके कि जहाँ पर हमें कानूनी तौर पे चाहिए है या फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वहाँ पर हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। विदाउट दोज थिंग्स वी कैन नॉट यूज़ अ डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट विदाउट हिज विल। HIPAA प्राइवेसी रूल्स एंड पीएचआई। सो अब कहाँ पर इसका यूज़ होगा? सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ जो है पीएचआई का दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, कि गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए हम अपनी इंफॉर्मेशन पेशेंट जो है वो दे सकता है कि गवर्नमेंट पीएचआई लेगी पेशेंट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क वो इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि हर हॉस्पिटल में एडमिट होने का टाइम और डिस्चार्ज की डेट होती है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड हो कि पेशेंट्स कौन से हैं, उनका कब एडमिट हुए, कब डिस्चार्ज हुए, क्या ट्रीटमेंट हुआ, ताकि उन रिकॉर्ड्स की बेस पे गवर्नमेंट और ज़्यादा बेटरमेंट के ऑप्शंस क्रिएट कर सके। देन इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या फ़ायदा है कि ताकि वो इलाज जो आउट ऑफ स्कोप है, यानी कि काफ़ी महंगा अगर है, वो करवाना पड़े तो हमारे पास इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, पेशेंट वक्त आने पर डिफरेंट इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए अपना इलाज करवा सके।